एबे आमे डिस्कस करबा हिस्टोरिकल रिसर्च। जमती कि यार नारू आम जानूचे हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइनटा कौन कर द पास्ट इवेंट एंड जहाँ सब डेवलपमेंट होची कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड कंक्लूजन जहाँ सब अच्छी ताकू कौन कर एनालाइज कर मेनली इट एनालाइजेस पास्ट इवेंट्स and develops concept and conclusion. पास्ट इवेंट को एनालाइज करिकी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करबो देन तार कंक्लूजन ड्रॉ आउट करबो। जहाँ सब प्रीवियस इनफॉरमेशन अच्छी जहाँ सब टेस्टिंग होती तार वैलिडिटी चेक करिवो तो सही अकॉर्डिंग कौन करिवो से कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कर परिवो। The purpose of historical research design is to collect, verify and synthesize evidence from the past to establish facts that depends or refute a hypothesis. बुझला? तो यहाँ मेनली पास्ट इवेंट गुड़ा को कौन करिवो एनालाइज करके कॉन्सेप्ट रो डेवलपमेंट करिवो बा हाइपोथेसिसटा कौन होची डिफेंड करची बा ताको रिफ्यूट करिवो सेटा डिसाइड करिवो। तो एठी तार कॉमन मेथड्स रहिची हिस्टोरिकल रिसर्च रो। फर्स्ट हला आइडेंटिफाइंग ए रिसर्च टॉपिक दैट एड्रेसेस पास्ट इवेंट्स जहाँ कि पास्ट इवेंट अच्छी से ही अकॉर्डिंग आम कौन कर गोटे रिसर्च टॉपिक आइडेंटिफाई करवा देन रिव्यू ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा देन सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ डाटा रिलेटेड टू पास्ट occurrences with help of techniques of criticism for historical sources and evaluation of the information. Then finally synthesis and explanation of findings in order to test hypothesis. तो फाइनली हाइपोथेसिसटा टेस्ट करा जिवो ट्रू कि फॉल्स बा ताको डिफेंड करिवो कि रिफ्यूट करिवो सेटा टेस्ट करा जिवो। तो पर्पस कोन रही हिस्टोरिकल रिसर्च रो देखिबा। फर्स्ट it enables educationists to find out solutions to contemporary problems which have their roots in the past जहाँ कि past information हम पाखरे किछि available अच्छी से सब गुड़ा करो solution पाइबारे help करूची। जमती कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स जमती पॉलिसी चेंज होची नेशनल पॉलिसी सब डिफरेंट आछि तो सब कहार हिस्टोरिकल रिसर्च पास्ट रे पॉलिसी कौन थिला तार रिजल्ट कौन मिलला तो सही अकॉर्डिंग तार मॉडिफिकेशन कौन हो परबो एंड आउटकम कौन रहबो सेटा डिसाइड करी होची। देन इट थ्रोज लाइट ऑन प्रेजेंट ट्रेंड्स एंड कैन हेल्प इन प्रेडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स को मध्य प्रेडिक्ट करी होची। प्रेजेंट ट्रेंड्सटा जानी होची से अकॉर्डिंग फ्यूचर ट्रेंड कौन रहिबा जानी होची तो एटा हेल्प करची हिस्टोरिकल रिसर्च। देन इट एनेबल्स ए रिसर्चर टू रीइवैल्यूएट डाटा इन रिलेशन टू सिलेक्टेड हाइपोथेसिस थियोरीज एंड जनरलाइजेशन दैट प्रेजेंटली हेल्ड अबाउट द पास्ट। Then it emphasizes and analyzes the relative importance and the effect of the various interactions in the prevailing culture. It enables us to understand how and why educational theories and practices developed. एटा मेनली हेल्प करची ए जिनस रे how and why educational theories and practices developed केमिति डेवलप हेची बा थ्योरी फॉर्मेशन केमिति हेची बा कोन पई हेची को रीजन पई हेची एटा हला सेति पई हेल्प करची। तापरे देखिबा characteristics of historical research. एठी खाली डाटा अक्युमुलेशन बा फैक्ट्स नहीं एटा टोटल कौन पास्ट इवेंट केमिति थिला से सिचुएशन टाको कैरी करची। It is a flowing, vibrant report of past events which involves an analysis and
explanation of these occurrences with the objective of recapturing the nuisance, personalities and ideas that influence these events. तो जेहेतु यहाँ कंडक्ट कला बेले कौन हो डाटा कलेक्शन करुचे रिसर्च मटेरियल्स गुड़ाक आउ थे रीड करने को पड़ुची मनुस्क्रिप्ट लिखा पड़ुची तो से कौन हो रिसर्च कौन करुची बैक फोर्थ जाऊँगी जितेबाला कलेक्शन राइटिंग रीडिंग ये सब कम करुची जोटा कि डिस्टिंक्ट फेज रे हवा कथा गोटे गोटे पर्टिकुलर फेज रे हवा कथा से सब एट ए टाइम होची तो यहाँ हेल्प करुची टाइम सेविंग्स रे. Then it deals with this discovery of data that already exists and does not involve creation of data using structured tools. तो ये डाटा क्रिएशन होनी डिस्कवर कराउची जोटा ऑलरेडी एग्जिस्ट अच्छी. Then it is analytical in that it uses logical induction. यहाँ मन रखा पड़ो. It is analytical in that it uses logical induction. It has variety of forces such as issues, events, moments and concepts. It records and evaluates the accomplishments of individual agencies or institutions. माने गोटे स्कूल बा गोटे कॉलेज रो केते ड्रॉप आउट रहला केते परसेंट लिटरेट रहले बा पास आउट केते हेले ए सब गुडाक ए टाइप रो डाटा कोन होची रेकॉर्ड हेकी रहि परची दादरा कि फर्दर तारो इवैल्यूएशन मध्ये हे पारुची सेतरु किछि हेल्प मध्ये मिल पारुची नेक्स्ट जे फ्यूचर रिसर्च करिवे. Then देखिवा steps in historical research. First step है identify a topic or subject and define the problem or questions to be investigated. First है गोटे subject को identify करिया पड़ो. Then search for sources of data. को सोर्स रु डाटा कलेक्शन करिवो सेटा को सर्च करबा को पड़िवो सोर्सेस. देन डाटा कलेक्शन करी इवैल्यूएट द हिस्टोरिकल सोर्सेस. हिस्टोरिकल सोर्सेस जहाँ सब है ताको इवैल्यूएट करिवो. इवैल्यूएट कला परे एनालाइज सिंथेसाइज एंड समराइज इंटरप्रेटिंग द डाटा और इंफॉर्मेशन. देन फाइनली राइट द रिसर्च रिपोर्ट. तो यहाँ है स्टेप्स इन हिस्टोरिकल रिसर्च. तो ये हिस्टोरिकल रिसर्चटा लार्जली क्वालिटेटिव इन नेचर. यहाँ मन रखा पड़ो क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंटल थिला क्वांटिटेटिव यहाँ है क्वालिटेटिव इन नेचर. ଏବେ ଦେଖିବା टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च. टाइप्स फर्स्ट वन इज bibliographic research. Then legal research. Then studying the history of ideas. Then studying the history of institutions. तो bibliographic research रे हमें देखिबा bibliographic research रु हमें पाई परिबा कोन ट्रूथफुलनेस जिनसडा जो जिनस भी पाइबा तारो फैक्ट्स कौन रही सेटा जानी परिबा जोटा कि द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द लाइफ कैरेक्टर एंड अचीवमेंट. ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सन और एडुकेटर्स. जेहेतु आम एजुकेशनल रिसर्च पढ़ुचे एठी हला फैक्ट लाइफ फैक्ट्स अबाउट लाइफ कैरेक्टर एंड अचीवमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट एडुकेटर्स.
बिब्लियोग्राफिक रिसर्च रु जानी हबो। देन लीगल रिसर्च रु कौन जानी हबो? एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स विषय जानी हबो बा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लीगल बेसिस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स, legal basis of educational institutions, run by different government जेमती कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब गुड़ा जानी हबो। देन लीगल स्टेटस ऑफ टीचर्स, ये सब गुड़ा लीगल रिसर्च रु जानी हबो। बुझला? देन स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज जेमती फिलोसॉफिकल आइडियाज, थॉट्स, साइंटिफिक थॉट्स, ये सब गुड़ा जानी हबो। फिलोसॉफिकल आइडियाज, साइंटिफिक थॉट, changes in attitudes over time, ये सब गुड़ा इंफॉर्मेशन पाई हबो। देन स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशन रो हिस्ट्री गुड़ा पढ़ी हमें तार कौन जानी परिबा? स्कूल, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रो हिस्ट्री सब जानी परिबा। तो सही अकॉर्डिंग मेथड्स अप्लाई हबो, मेथड्स विषय जानी परिबा एंड हिस्ट्री विषय जानी परिबा। तो ये थिला टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। एबे देखिबा क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएटिंग हिस्टोरिकल रिसर्च। गोटे हिस्टोरिकल रिसर्च को इवैल्यूएट करिवार क्राइटेरिया कौन सब रही? फर्स्ट है प्रॉब्लम। हैज द प्रॉब्लम बीन क्लियरली डिफाइंड? प्रॉब्लम जहाँ भी अच्छी से क्लियरली डिफाइन होइछि ना नहीं, सेटा गोटे फर्स्ट क्राइटेरिया चेक करने को पड़ो। It is difficult enough to conduct historical research adequately without adding to the confusion by starting out with a nebulous problem. First है प्रॉब्लम टा को क्लारिफाई करिया को पड़ो। क्लारिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। देन से प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन अच्छी ना नहीं, सॉल्वेबल और नॉट सॉल्वेबल। से इन्वेस्टिगेटर बा रिसर्चर कैपेसिटी सेतिकी अच्छी ना नहीं, से सेटा को सॉल्व कर परिबो ना कर परिबोनी, ये तीनटा जिंस देखिबा को पड़िबो प्रॉब्लम रे। देन डाटा, सफिशिएंट डाटा अवेलेबल अच्छी ना नहीं, सेटा देखिबा को पड़िबो फॉर द सॉल्यूशन। Or has there been an over dependence on secondary or on verifiable sources? से जो sources रो हमें डाटा कलेक्शन करवा, से सोर्स टा कौन वेरीफाई हेची ना नहीं, सेटा देखिबा को पड़िबो। जो वेरीफाइड सोर्सेस रो ही डाटा नबाटा करेक्ट हबो, ना कि मन इच्छा डाटा नहीं जीवा, से वेरीफाई ही नहीं हेई नथिबो, तार करेक्टनेस किछि नथिबो, फॉल्स डाटा नहीं हमें ता ऊपर करबा, सेटा हेई परिबनी। तो सेटा अगर चेक करने को पड़ो। देन
डाटाटा आम जो डाटा कलेक्शन करिसेंती बा डाटा एनालाइसिस करिसेंती तार रिलेवेंस कौन अच्छी, तार रिलेवेंस अच्छी ना नहीं आम टॉपिक अनुसार सेटा इम्पोर्टेंट ना नहीं, इम्पोर्टेंट और एडिक्वेट ना नहीं, सफिशिएंट ना नहीं सेटा देखा पड़ो बा सेटा को एनालिसिस करने को पड़ो एनालिसिस पेज रे। देन इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिट करने को पड़ो डज द ऑथर डिस्प्ले एडिक्वेट मास्टरी ऑफ हिज डाटा एंड इनसाइट इनटू देयर रिलेटिव सिग्निफिकेंस। ऑथर बा रिसर्चर जी अच्छी तार कौन से जो डाटा से रखी बा कलेक्ट करी बा जोटा रखी सेटा तापाई एडिक्वेट हम ना नहीं, सी सेटा जानी कोटा एडिक्वेट कोटा अनएडिक्वेट डाटा सेटा से जानी ना नहीं, से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रो सेटा डज इट डिस्प्ले एडिक्वेट बा ऑब्जेक्टिव टाकू फुलफिल करूची ना करूनी। जदि पर्सनल बायस आसी होची ताहले सेटा एडिक्वेट हम नहीं, फॉल्स हो जिवो, पर्सनल बायस रहिवनी। और जो डाटा कलेक्शन करची सेटा टेस्टेड और वेरीफाइड हेची ना नहीं से थ्रू इंटरप्रिटेशन करिहबो बा इंटरप्रिट करिहबो सॉल्यूशन टाको। आ गोटे है रिलेशनशिप क्रिएट करि परची ना नहीं जो डाटा कलेक्शन करिची ता भितर एंड जहाँ रिसर्च करूची जो टॉपिक ऊपर ता भितर रिलेशनशिप टाको इंटरप्रेट करि परची ना नहीं, ए क्राइटेरिया टाको देखिबा को पड़िबो जेतेबेले हिस्टोरिकल रिसर्च रो इवैल्यूएशन हबो। Then finally presentation. Does the style of writing attract as well as inform? Does the report make a contribution on the basis of newly discovered data? जो research report writing जोटा करवा research report जोटा राइट हबो सेटा फास्ट तो देखिबा attractive अच्छी ना नहीं, then कंट्रीब्यूशन तार अच्छी ना नहीं, से सॉल्यूशन ठीक दे पारुची ना दे पारुनी, डाटा इंटरप्रिटेशन ठीक कर पारची ना कर पारनी, और सिंपली अनइंस्पायर्ड बैकवर्क डज इट रिफ्लेक्ट स्कॉलरलीनेस। खाली से कौन करची टिपिकी नहीं आसी से जिनसटा को बा उठे देची कॉपी कर देची से जिनसटा को चेक करबा को पड़ो, तो यहाँ है प्रेजेंटेशन। तो यही सब क्राइटेरिया देखिकी कौन करबा को पड़ो इवैल्यूएशन करबा को पड़ो हिस्टोरिकल रिसर्च रो क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएटिंग हिस्टोरिकल रिसर्च। तो यही सब क्राइटेरिया को आगे रखी हिस्टोरिकल रिसर्च टाको इवैल्यूएट करबा को पड़ो। तो ये आम देखिले यार मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च केमती हेल्प कोची, पर्पस कौन रही, देन क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएटिंग हिस्टोरिकल रिसर्च, देन स्टेप्स इन कंडक्टिंग हिस्टोरिकल रिसर्च।